Welcome back in the classes of Unix and Shell programming. Today we learn awkScript. In last session we already learned how to work awk command. Now today we learn the awkScript. AwkScript are divided into three sections. First section is the begin, then body part and then end section. So let us learn begin and end section of awkScript. So awkScript, it contains begin and end section. Now in the begin there are a pre-processing section. In that you can write some echo statement. Then body part, in that you can write some action statement. Number of action statement you can included in this body part. Then end section, there is a post-processing section, and in the awkScript there is a hash mark which is used to give the comments. Now the awkScript begin section. This is a pre-processing section. It performs the processing which must be completed before the file processing start. Yes, and it is useful for the initialization such task. कुछ task को initialize करना है, variable initialize करना है, कोई statement declare करना है. So you can use this begin part. Then body part. Body part is a processing statement which contains the main processing logic. In that you can apply the number of statements, loops, then number of commands like that, and it will contain 100 records. The body will execute 100 times. So it's just like loop. अगर आप उसके अंदर डालोगे तो 100 record होंगे तो 100 time वो loop execute, body part execute होगा. So there is a body part, and the last is the end part, that is a post processing part, and which contains the logic to be executed after all the input data have been processed. Yes, if you want to printing some reports and if you want to print some grand total, then you can use this end part. Fine. So this awkScript begin and end section are divided into the three parts. First is the pre-processing, then the body part, and the post-processing. Now after the script, in awkScript you can use the array. The concept of array is same, but over here you can write the array. That means you have to declare the array name and the index value is equal to value. So example is, for example, my array is a list, and in the square bracket I can provide the index value, that is list 1, list 2, and in the list 1 I can store 1, list 2 I can store 2, 3 like that. तो इस तरह से आप array use कर सकते हो. The concept of array is same in all programming language, but the syntax is different. Same way Unix awkScript provides some special array, that is associative array or hash array. Now associative or hash array क्या है? So it shows the information which is held as a key value, and that index is the key that saved the internally as a string. So in that array normally you can see the index contains 0, 1, 2, 3 like that, but over here in associative or hash array the index value contains some string like that. See over here, this is the Robert, George, Johnny, ये सब क्या है? It is the index value, and actual value of that is over here. The data is over here, 46, 22, 22, 19, 34 like that. Same way you can store the index value like 19-24 into double quote. So it will store as a string in the associative array as an index. So and the data is like that. आप डेटा सेल्स के डेटा इस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हो और इंडेक्स इस तरह से एसोसिएटिव एरे में दे सकते हो. सो एसोसिएटिव एरे इज यूज अ स्ट्रिंग एज एन इंडेक्स. Then awk provides a different kinds of built-in function which is used for many purposes. For example, first int, that means in that you can write x, matlab it will return the integer value of x. Same way sqrt, that is it returns the square root of x. Then length, that means it returns the length of a complete line. Then length x, that means it returns the length of x variable. Substring provide three different arguments. String stg, that means string m and n. So it will return the position of string, length n, and starting position of m. Then index s1 comma s2, there are two string over here s1 and s2, and it return the position of that string. Then split function is used string into array, that means split the string into array using
some different delimiter and it will return the number of field. So this must awk built-in function which is used for different purpose. So let us see the example. First of all, I can use int integer. So over here I can write awkScript like that. Awk, then begin part. In that begin part I can write print an integer function 3.534, integer 4, an integer minus 5.223, an integer minus 5. So it will be give the output like that. सिर्फ integer portion ही display करेगा, fraction portion display नहीं करेगा. So 3 from this input it will return 3. This function return 3. This function return 4 as it is. This function return minus 5 and this function also return minus 5. So integer, that means it will return only the integer part from the given value. So you can write this awkScript like this. Then sqrt. Same over here, I can write awk and single quote begin section. In that begin section, I can print some sqrt function. So first sqrt function contains 16. That means it return 4. Second sqrt function contains 0. That means it returns 0. And minus 12. That means it returns nothing. Now the next is length. Length function can return the length of the whole string. So over here I can write awk in the single quote begin and print length of the function, and in that I can write this length matlab ke string over here in the double quotes. Yes, so it will return 9, the length of this string. Then index. Index return like this. I can print the index value from graphics, or second string is ph. Two string मैंने provide की, तो graphics और ph. So from this graphics, ph position is 1, 2, 3 and 4. So it will return me 4 from the index. And in second यूनिवर्सिटी लिखा है और यूनिवर्सिटी में से मुझे ढूंढना है ABC. सेकंड स्ट्रिंग इज ABC. सो ABC नाम की कोई भी स्ट्रिंग यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल नहीं है. सो दैट्स व्हाई इट रिटर्न 0. सो इंडेक्स वैल्यू कंटेन टू आर्ग्यूमेंट S1 एंड S2, दैट इज टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रिंग. सेकंड स्ट्रिंग जो आप दोगे वो स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग में कहाँ पे कौन सी पोजीशन पे है उसकी पोजीशन आपको डिस्प्ले करेगा. दैट इज द इंडेक्स. नाउ आफ्टर द इंडेक्स सबस्ट्रिंग. Substring provide the substring from the given string. So it contains three different arguments, string, m and n. Over here, see the example. This is my string, Unix and cell programming. Then m, that means कि मुझे कहाँ से string find करनी है. So I can write the position value, that is 9. So over here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So space 9 और मैंने कहाँ पे एंड करना है वो n के अंदर स्टोर होता है तो वो नहीं लिखा है. दैट मीन्स 9 से स्टार्ट करके एंड तक की पूरी स्ट्रिंग मुझे डिस्प्ले करेगा ओवर हियर लाइक दिस. यस, सेम वे सबस्ट्रिंग कंटेन द डिफरेंट आर्ग्यूमेंट लाइक दैट. सबस्ट्रिंग यूनिक्स एंड सेल प्रोग्राम, दिस इज माय ओरिजिनल स्ट्रिंग फ्रॉम वेयर आई वांट टू फाइंड सम सबस्ट्रिंग. सो सबस्ट्रिंग फाइंड कौन सी पोजीशन से करना है 9. सो फ्रॉम ओवर हियर, और 9 से कितने पोजीशन से करना है 5. सो इट विल रिटर्न cell 9th position, then 1, 2, 3, 4, 5. So 5 position तक मेरी cell return करेगा. So I hope you understand this substring. Then the string split function. Split function contain three different arguments, string, array and CS. See over here, the string contain my nationality is Indian, and the array, that means it contain the delimiter, that is a spaces, and I can provide this space over here and I can give the value for loop I is equal to 1 to n and contain the original value. That means के आपका loop कहाँ तक घूमने चाहिए, last Indian string आए तब तक. So it will differentiate my then nationality is an Indian. ये 4 जो डेलीमीटर मैंने प्रोवाइड किया है यहाँ पे स्पेस, तो जहां से स्पेस आएगा वो लाइन नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले करेगा. नेशनलिटी के बाद स्पेस आया तो इस डिस्प्ले नेक्स्ट लाइन पे किया, देन इसके बाद आया स्पेस तो इंडियन नेक्स्ट लाइन पे किया, लाइक दैट. फाइन. सो इन दैट वे स्प्लिट विल वर्क. Then if statement that you know very well, that is a control flow statement. If the concept is same, that is if your condition is becomes true, then action part is execute, otherwise else part is execute. So over here see the example, if awk minus f and pipe sign for the delimiter. Why? Because over here the third column, that is $3
कंटेन मैनेजर और $3 कंटेन जनरल मैनेजर। अगर मैनेजर मिला या जनरल मैनेजर मिला, इफ ये दोनों में से कोई भी एक वैल्यू मुझे मिली तो ही $1 और $3 की वैल्यू प्रिंट करवानी है, अदरवाइज $0 पूरी लाइन प्रिंट करवानी है। सो आर यू गेटिंग दिस? इफ देन $3, दैट मीन्स के $3 में अगर मैनेजर मिला या $3 में GM मिला तो $1 और $3 की वैल्यू प्रिंट करो, अदरवाइज प्रिंट $0, दैट मीन्स पूरी लाइन प्रिंट करो एंड ओवर द सिंगल कट। ये पूरा मैंने एक लाइन में ही लिखा, ऑक देन -F, then this is the delimiter for differentiate these columns, then single quote, and in the single quote curly braces I can give the if condition, and then over here the curly braces is over and single quote is over. Now from where you want to find out this manager and GM? You have to find out that manager and GM value from the EMP file. So I can give the file name over here. So like that you can perform this if condition. After that, the loops. See, for loop, while loop, do while loop. 3 types of loop are that. See, for loop, it is a simple, syntax is also simple, 1 to n. That means if you can write 1 to 10 over here, so आपका loop कितने time घूमेगा? 10 time. जब तक 10 नहीं मिलता तब तक. And over here you can give the increment, that is I plus or equal to 2. आपको जितना increment देना है उतनी वैल्यू को इंक्रीमेंट दे सकते हैं. दैट इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट विच वी ऑलरेडी लर्न. नाउ द डिफरेंट कंसेप्ट फॉर लूप फॉर एरेज. नाउ फॉर लूप के अंदर आप एरे डाल सकते हो. सो द कंसेप्ट इज लाइक दैट, फॉर देन वेरिएबल इन एरे. आपको यहाँ पे वेरिएबल में एरे की वैल्यू स्टोर करवानी है एंड देन इट विल एक्सिक्यूट द स्टेटमेंट वन बाय वन. सो ओवर हियर I give you one example, that is 4 and x, that is my variable, and in that variable I can store the value of department cells. ये department cells नाम का पूरा एक फाइल है, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे स्टोर कर रही. तो 1 by 1 वैल्यू कहाँ पे आती जाएगी? x में. That's why I like to print x. मतलब पहली वैल्यू डिपार्टमेंट सेल की, फिर दूसरी वैल्यू, इस तरह से लूप घूमता जाएगा और 1 by 1 वैल्यू डिपार्टमेंट सेल्स नाम की फाइल की डिस्प्ले होती जाएगी. सो लाइक दैट यू कैन डिस्प्ले द डिपार्टमेंट सेल्स डेटा एंड इट इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ फोर लूप्स फॉर द array. Now next is the while loop. You know the while loop. First it will check the condition and then execute the statement. So over here, while the logical expression, if that is condition becomes true, then statements is executed. So over here I can write one example, that is I is equal to 1 and I less than or equal to nf. nf that means the number of field in the file. अगर मेरी फाइल है एम्प्लॉय और मैंने $1 $2 कितनी फील्ड है? 6 फील्ड है, तो मेरी 6 फील्ड तक जानी चाहिए. सो ओवर हियर एनएफ इज द नंबर ऑफ फील्ड इन द रिकॉर्ड. एक पूरे रिकॉर्ड में जैसे मैंने एम्प्लॉय नंबर लिखा, एम्प्लॉय नेम लिखा, डेजिग्नेशन लिखा, सैलरी लिखी, डिपार्टमेंट का नाम लिखा और ज्वाइनिंग डेट लिखा. सो कितनी फील्ड हुई मेरी? 1 2 3 4 5 एंड 6. सो एनएफ वैल्यू इज 6. एनएफ की वैल्यू क्या होगी? 6. सो इट विल चेक आई इज लेस देन और इक्वल टू 6. अगर आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 6 तक हो तब तक मेरी आई की वैल्यू प्रिंट करनी है. प्रिंट आई $i एंड i++. जब तक आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 6 रहेगी तब तक प्रिंट करेगी. जैसे आई की वैल्यू बढ़ जाएगी it will not printed the output. It is just simple a while loop. Same way it will work for do while loop. Do while you know very well. Do while का concept आपको पता ही है. At least one time conditions true हो या ना हो, at least one time your loop will be executed. So it is like do, then statement and while condition. It's just like a statement is executed at least once even if the condition becomes false at the beginning. एक बार तो वो loop execute होगा ही, उसके बाद वो check करेगा condition true है कि नहीं. So it is like that. I is equal to 1, print $0. $0 print हो जाएगा. Then I++, I की वैल्यू बढ़ी and then it will check I less than or equal to 10. जब तक I की वैल्यू less than or equal to 10 है तब तक घूमेगा. But at the first time तो वो पूरा ये आउटपुट डिस्प्ले कर देगा. Fine. So this is the concept of do while loop. So are you getting the awkScript and how to use built-in functions, how to use if condition, how to use for loop in the awkScript? The concept is same for all the loops and if conditions, but the syntax is different. Fine all of you?
I hope you understand this. Okay, thank you.